In another first, Delhi University this year has introduced amongst the gender options the transgender option in its admission forms for the undergraduate programs. But how welcoming is the university to transgender students? Here's a special report. Sneha can finally apply to Delhi University for a BA degree. The university's new admission form allows her to apply under the other gender category. काफ़ी टाइम बाद जब हम लोगों को राइट्स मिला कि हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, तो अब मैं अपना एडमिशन स्टार्ट कर रही हूँ। वापस मेरी पढ़ने की जो उम्मीद है वो जगी है। हम लोग अपने फ्रीडम के साथ हम जैसे रहना चाहते हैं वैसे रह के हम लोग मतलब एक दबाव में आकर, लेकिन मजबूरी थी, हमें अपनी स्कूल कंप्लीट करनी थी, तो हमें ना चाहते हुए भी उस बेस में और वैसे रहना पड़ता था। Sneha is hopeful, but the ground reality is that transgender students like Ishana and Rihanna, who have been in Delhi University for over 2 years, face harassment. फर्स्ट टाइम जब मैं एंटर करी थी कॉलेज के अंदर तो मतलब 10-12 लड़के पीछे बढ़ गए थे, काफ़ी गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे। फिर मन ही नहीं करा जाने का, क्लास में बैठूंगी तो फिर लोग कमेंट करें कहाँ से पढ़ाई हो पाती है। निकलते पड़ जाओ तो हे हिजड़ा जा रहा है। अरे हिजड़ा जा रहा है तो क्या हुआ, हिजड़ा इंसान नहीं है क्या? जिनके पास प्राइमरी शिक्षा नहीं है वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी में कैसे लेंगे? The administration claims to be committed to making the university a safe space for transgenders. So far as transgender is concerned, we have already written to the university, and I am very active in making a separate committee at the student welfare level, at the university level, where the transgender can go within a week for 1 hour, 2 hours, can be counseling for them if there is any harassment. Activists, however, feel this is just the first step. One more thing which we have to look into is that how enabling environment we give to the transgender community and the students. There should be ensurement that their education, they don't drop education by ragging. In a regressive move last year, Delhi University scrapped Ordinance 15D, which was the university's gender-neutral anti-harassment law, in favor of a new law that recognizes only women as victims of sexual harassment, leaving Delhi University's sexual minorities vulnerable. The Delhi University, in its progressive move, has introduced a third gender option for undergraduate admissions. But the harder part is to make the campus a transgender-friendly space. With camera person Jagdish Prakash, Kinshu Dang for NDTV.